तो फिर ये रिक्वेस्ट आई, आज रिक्वेस्ट आई है, तो मैं आपको पूरा सत्संग बताऊंगा। माय जर्नी विद गुरु। मैं गुरु जी को 1996 में मिला था, पंचकुला। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अपना मकान बना रहा था। तो वहाँ फिर मैं आई हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम, चिल्ड्रन वर नॉट सेटल्ड एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम यंग। तो जैसे मैं वो अपना घर बना रहा था, तो मैंने अरदास की, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा। 3 दिन के बाद मेरे को एक मैसेज आई गुरु से कि वो मेरे को बुला रहे हैं। मैंने पहले 2-3 दफा अवॉइड किया, क्योंकि कई साल कई लोगों को मैं मिला था, महापुरुषों को कुछ मिला नहीं था। तो फिर जब मैं गुरु जी को मिला, फर्स्ट टाइम आई मेट हिम वाज इन द रिसेप्शन हॉल, गोल्फ क्लब सुपर। जब मैं उनको देखा था, वेरी लवली पर्सनालिटी, वेरी हैंडसम, नाइस क्लोथ्स। सर मैंने मेरे को थोड़ा शक पड़ गया कि इनके अंदर कोई माला नहीं है, कोई मत्थे पे तिल नहीं है। एनीवे, जब उनको मैंने मत्था टेका, तो मेरे को बोलते, आया कर, मिला कर। आई वॉज अट्रैक्टेड टू हिम लाइक अ मैग्नेट। गुरुजी वॉज स्टेइंग विद इन अहूजा सेक्टर 2। मैं पंचकुला में सेक्टर 4 में रहता था। तो रोजाना फिर जाना शाम को जन अहूजा के घर, और गुरुजी को मत्था टेकना, और काफी संगत होती थी, तो मैं बैठता। 9-10 दिन तो उन्होंने कोई बात नहीं की। 10 दिन के बाद मेरे को और मेरे वाइफ को उन्होंने अपने बेडरूम में बुलाया। वहाँ 6-7 कप कॉफी। गुरु जी ने सब कुछ बता दिया, अपने पास। वाइफ को बोला, तेरे पास 40 साउथ इंडियन साड़ीज हैं, right? तेरे पास इतनी ज्वेलरी है, इतना गोल्ड है। तो माय वाइफ सेड, गोल्ड तो है, बट आई कांट से हाउ मेनी डॉलर्स, बिकॉज दे स्टडीड विद सम स्टोन्स। फिर मेरे गुरु जी उनको बोलते, तेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ी कोठी 400 की चंडीगढ़ में थी, वो बेची, और उसको इतना पैसा मिला। उसके बाद जब हम, अच्छा, फिर कहते, तेरे काके ने सुनता नहीं, जब सन कैनल गया, yes, I had a problem. I said 25 years back. He lost his hearing when he was 6 years old. कहने की तक तू बाप है। मैं कहा, yeah, I tried his medicines and met various doctors at all places. Oh, can be, I have to live with it. So somebody told me that ghost spirits, evil spirits, you go and meet them, and they are the answer to your problem. मैं उनके पास भी गया, उन्होंने ये किया, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है। तो फिर गुरु जी मैंने कहते, काके देख कम दे विच है, तुम 10 कुत्ते ईच है, बादाम रोगन पा ले। मैं कहा, गुरु जी, मैं बादाम रोगन पहला भी पाया है, सरों का तेल भी पाया है, मूलिन ऑयल भी पाया है, गेल ऑयल पाया, सब कुछ पीता, कुछ नहीं मिले। कौन अंकल, कौन तेरा तेन गुरु कह रहे कि बादाम रोगन पा 10 दिन। सो फॉर 10 days, both the years, I drop each, मैं शाम में पालता था। On 10th midnight, मैंने उठ के मेरा बेटा कहता, I'm having a terrible earache. So I thought to myself, गुरु जी तो कहने से मैं hearing ठीक कर दूंगा, ये तो होगा दुखने लग गया, another problem. Next day I took him to the hospital. The doctor told me, ये तेल तो थोड़ा पड़ रहा है, कि और इन्फेक्शन हो जाएगी। मैं कहा, जी सुनता पहले इन्फेक्शन की नहीं। एनीवे, उन्हें कल साथ ही था, एक मैंने कहते कि अगले परसों 2 दिन के बाद I will carry out his odometer test. So we went for his odometer test. It's a small room. एक बेटा स्टूल पे बैठ गया, प्लास्टिक स्टूल, और हेडफोन्स लगा के, एंड दे थोड़ा कंप्यूटर इन फ्रंट, वो थोड़ा प्रेस करता सी, which you cannot learn outside. So my son got up, he fell down, and
आई टोल्ड हिम गेट अप एंड सिट अगेन। वो फिर स्टूल पे बैठा, फिर हेडफोन लगाए। ही गॉट अप एंड टुक आउट द हेडफोन्स फ्रॉम हिज ईयर। मैं कहा की होया? कहता पापा आवाज बहुत उच्ची सी, मैंने चेक करा। कैन यू बिलीव इट? He got his hearing back after 25 years, a quarter of a century. ये कौन कर सकता है? ये रब ही कर सकता है। फिर मैं कर गए। I still felt that perhaps Guruji has patronized me. What is my test honest telling? I don't believe. जिस समय मैं कर आया, I was driving the car. एक को ड्राइवर सीट पे बैठा था। जिस तरह से बाहर होते ये अगेन कि मैं अभी पीछे पीछे on the driving. At a distance of approximately about 12 to 15 feet, he aggressive my picture. I called out his name. He looked back and said, yes, Papa. That was a confirmation to me that his hearing has been destroyed. As a kid, or Guruji Maharaj Ji से पहले 3% आएगी बोलना, he got 20% hearing back. फिर मैंने महीने के गुरुजी कहते उन काके लकी हारा। मैं कहती हूँ hearing उन्हीं है ना, तो दवाई दे रहे हैं। मैं कहा गुरुजी कुछ तो मैंने कैसे दर्द दे रहा है, बादाम रोगन दोनों खाना पाया, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ नहीं थी। कहना झूठ क्यों बोल रहा है, तू दिंदा नहीं हुण मैनू कहना तू नहीं दिंदा। मैं कहा गुरु जी सच्ची मैं नहीं ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, तू दवाई दे रहा है। मैं कहा गुरु जी मैं नहीं दवाई दे रहा, तू क्यों बोल मेरे गुरु हो। कहता सवेरे शाम तेरे घर कीर्तन चलता है ना। मैं कहा हाँ जी, सवेरे भी कीर्तन होता है, शाम भी वही दवाई, वही दवाई। गुड enough. As the time passed, he got his hearing back. ए गुरु जी, ये उसी सेम इवनिंग आई कॉल बैक टू गुरु जी। कहते हाँ गुरु मैंने कहते, मैं कहा हाँ गुरु जी हेयरिंग बड़ी ठीक हो गई। कहता देखा देखा कहूँ मैं अजे रब दिखाया है। मैं कहा गुरु जी मेरे वास्ते कुछ नहीं होता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब कहता है गॉड इज गुरु एंड गॉड इज गुरु एंड गुरु इज गॉड। मैंने कहते हम तू उठ के भगती कर, बिकॉज आई हैड सेड दिस फाइट फॉर 25 years, सब कुछ किया कुछ नहीं मिला। सो मैंने कहते हम तू दोबारा पाठ शुरू चंगी तरह स्टार्ट करना। There was so much joy outside, and एक की भी आवाज आ रही। मैं कहता दिस इज व्हाट क्रो स्पीकिंग। हाँ की भी है। आई फील so comfortable in that. Oh, they were the second incident or मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜੇ ਪੈ ਜਾਣਾ on the floor, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ and we should talk normally to him, not realizing that he is so powerful. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, my heart beat to go 180 beats per minute. All medicines were tried. I went a number of times in emergency. On injection देना to be keep him. Ultimately, I got fed up. I said, I must look into it. तो मैंने डॉक्टर कहना we have to look at your operation and you come and so and so. मैं दिल्ली चला गया जी, हॉस्पिटल पे सीधा। I had taken all the history of my background regarding the Paath. Sorry, this is proper. फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ Delhi, we checked up all my details and this is tomorrow we schedule for further investigations. For further investigations, Dr. ECG, ECG is all working, machine wasn't working. फिर उन्हें we sorted it out.
So I asked the reason he report. Can they doctor सारे इसमें क्या कहने हैं? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ TMT ਟੈਸਟ। ਮੈਂ TMT ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ TMT ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ 15 ਮਿੰਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਤਾ ਨਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਦੇਖੋ। मैं वो करना गया वाइफ बात लड़की आई वॉज इनसाइड लंबा पाता टेबल पे साथियों की तारा लाते हैं तारा से तारा लाते हैं टेक्नीशियन होते हैं इन द मीन टाइम 4 रेजिडेंट डॉक्टर्स चिट्टे कोट पे आ गए। मैं क्या हूँ करता हूँ मामला गड़बड़ है समथिंग इज रॉन्ग दैट इज व्हाई द रेजिडेंट डॉक्टर जय गुरु जी अंकल, आपकी वॉइस एको कर रही है, थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। जय गुरु जी। ओके ओके क्या डॉक्टर आ गई एको देखने वास्ते फिर मैं आई गॉट स्केयर्ड आल्सो। In the meantime, मेरी आँख भी फड़कने लगी। And I had a split second of thought when I'm sitting with Guruji 4 months earlier in the Paath. Mr. Sharma Guruji चरण दबा रहे थे और गुरुजी ने कहता in the meantime Guruji also called me I should start pressing his left feet। मैं भी आ गया। फिर शर्मा पूछता गुरुजी कदे कदे मेरे सामने कदे काली बिल्ली क्रॉस करता ये ऐसे ठीक नहीं समझते। गुरुजी कहते ये बहम है तुम क्यों पहना ये बहुत ही बहम है जो भी तेरे सामने कोई काली बिल्ली क्रॉस करती है तो कह रहा हरिओम हरिओम वाहिगुरु वाहिगुरु हूं तेरा काली बिल्ली बड़ी कि हरिओम बड़ा। फिर गुरु जी कहता गुरु जी कदे कदे मेरी अख भी फड़कन लग जाती है। गुरु जी लिख सकती शर्मा क्वेश्चन पूछ रहा है कहते तू रब का शुक्र कर तेरे बॉडी च कोई डिफेक्ट सीगा जिस तरह तेरी अख फड़कन लगी ये रब की तरफों तेरा जिसम का एको प्रेशर हो गया। एको प्रेशर यानी कि तेरी कोई बीमारी सी वो रब ने तेन अख फड़का के एको प्रेशर करता वो तकलीफ। So that split of a second when I was on the table, at once I came to know that there must be something wrong। और जी मेरी अख फड़की थी वो जो प्रॉब्लम भी सीगा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जी डॉक्टर कहता है वक्त पे चला गया मैंने कहता नेक्स्ट डे यू कम। नेक्स्ट डे मैं आया डॉक्टर कोले read my entire file, my name, my house number, my phone number, my name, my address। This was to confirm to me that he is reading the correct file with the patient। Dr. Ji मैंने कहते Colonel, you are not 100% on a pause of 2-3 seconds मैंने कहते you are 100% fit। There is nothing wrong with you। I don't have to prescribe any medicine because everything is clear। मैं कहता डॉक्टर साहब पहले तो मैं इन्ने कई सालों तो मैं प्रॉब्लम हो रही सी हाउ कैन इट हैपन एकदम ही मेरा ठीक हो गया। कहता आई कैन नॉट हैव एन आंसर टू दिस बट यू हैव बीन क्योर्ड। देन आई टोल्ड हिम मैं कहा डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰਸ ਯੂ ਗੋ ਬਾਈ ਲੌਜਿਕ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ he was rather surprised for the first time the spirituality of Mahapurush can also cure the disease। ये गुरु जी के पैसे गए। फिर हाँ जब before I went to Guruji for this डॉक्टर चेकअप उसी शाम ਨੂੰ मैं एक दिन पहला आया ਸੀਗਾ पंचकुला दिल्ली एम्पायर स्टेट मैं हॉल 'ਚ बैठा ਸੀਗਾ and an old man who was sitting with Guruji in his room he came
He says, Uncle, Guruji can say nothing is wrong with you. I say, you can feel my pulse. Pulse is going very fast. Please convey this to Guruji. So Guruji was after some time, Sangat Pargisi, Guruji came, everybody stood. Guruji अपने chair पे बैठे, ऐसे बैठ गए. And I was then Guruji I was giving prasad. On that day, he was giving samosa. मैं कहा my God, मैं तो blessing लेना आया है. इतने समोसे, बड़े बड़े, spicy oil. ये बंदे ने किसी ने मारना है ना, आ समोसे दे. This is thought that come to me. कि मैं परेशान निकल जाना, so that I don't eat samosas. Anyway, something kept telling me you keep sitting. जब समोसा क्यों आई 4-5 बंदे गए थे, there was no samosas in the basket. I said, oh, lucky I am. कृपा भी हो जाएगी, blessings भी हो जाएगी, और मैंने समोसे भी नहीं मिले. जिस तरह मैं गुरुजी कोड़े मत्था टेक किया, and I got up, गुरुजी ने सज्जा हाथ उन्होंने हवा से मार दिया and gave me 5 samosas. Everybody in the hall was shocked. Everybody in the hall was shocked. किसी को नहीं. उसके बाद मैं बैठा, 15 मिनट के बाद गुरुजी ने फिर मैंने बुलाया, फिर 2 समोसे देते. I went into the samosas. मैं सोचे कर बैठूं with a vomit. So in the meantime, I thought, इसे गुरुजी कहते ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਿਠਾਈ. ਲਓ ਜੀ, I had that. फिर गुरु ना तो जब जान लगे मैंने कहना तो कल अस्पताल जाएगा. मैं कहा गुरुजी जो थोड़ा हुक्म, तू फौजी है, तू शक्ति है, तू जूझ जाए. नहीं, मैं कहा गुरुजी जो तुसी कहो कोई हुक्म जो मैं पालू. अच्छा चल तेन बहम रहना जा मौज कर अस्पताल. So I went the next year. What happened? I've just narrated to you. ये गुरुजी कृपा के अंदर देखा, उन्होंने तेरी छाती पर जैसे फाड़ के देने रुपया 5 लाख देने. मैं कहा गुरुजी जब तुसी होती है, why haven't you come? And the kalyan मौज करनी, ऐश करना. As a matter of fact, when you're sitting with Guruji, you feel so comfortable. You feel so nice. Sorry. Every aarti hai. My son-in-law who was in the he was in London on that deputation to the convent. Before he came, he got his medical checkup in London, perfectly well. He came to India, it was Saturday. The offices were closed, and he went to Apollo Hospital to meet his friend. Jad ho gaya, he met his friend. Friend offered him a cup of coffee. 5-6 patients were sitting outside. In the meantime, his boss, director, and he saw that my son-in-law and the doctor are both having coffee while there are 5 patients with him. Doctor Daria on an immediately prescription for this test, this test, this test. So my son-in-law said, I have done all these tests and he said, no, I have to clear my doubts. Only in the time. Because he wanted to save his skin. The director was or you're not giving prescription. Oh, you blood and then the doctor rings him up. He said, come, there's something very serious. He came and he says, the blood report reveals that there is some cancer in the body. I was in said, perfectly all right. He said, anyway, the blood report says this. But he said, then how did you suspect them having cancer? The doctor can say, I didn't ask for any cancer test. Technician has made a mistake by carrying out this test also. And I'm glad that he made this mistake so that the truth of your health of your body has come on TV. So he asked him, where is cancer? He said, further investigations will be carried out. Then Dr. Pandu, head of the internal medicine in the AIMS,
उन्होंने गल की थी, he is a strict follower of Guruji. And वो मैंने कहना asked thyroid, they detected it was a thyroid. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ specialist of thyroid ਦਾ surgeon, he is on duty some. But a friend of mine, Mr. Sashival, he has come from Sloan to do cancer surgery to America. He happens to be here in his bed. So he spoke to him. He says, look, you send the patient to me. So next year, we met the doctor. He said, I've seen the report. There is no radiation. There is no chemotherapy. The thyroid gland has to be taken out. And he says, whatever the money is, to current deposit. Now it happened to be Saturday. Bank was, it was second Saturday, bank closed. मेरे जेब ਵਿੱਚ कल 1.5 लाख रुपए ਪਿਆ ਸੀ. So when I went for admission on Sunday, वो कहते जी so पैसा जमा कराओ, by bank draft. मैं कहा बैंक ड्राफ्ट नहीं, आज नहीं मेरे को कैश है 1.5 लाख रुपए कर, बाकी मैं तुम चेक देंगे. कहते we don't accept checks, we accept bank draft. Good luck. In the meantime, a friend of mine, my daughter came. पता नहीं कितों कहना कोमल अब 5 लाख. So she says, no, my father will arrange after some time. So I asked my daughter, I said, तू ले लेना सी पैसे वापस करना. He says, remember, गुरुजी कहते सी ब्लैक मनी कितने नहीं चलती. ये जो ब्लैक मनी लेंदे ते कम बड़ा बड़ा खराब हो जाता. मैं बोला, so जैसा पैसे आए मेरे को he pushed off to Bombay. When he came back from Bombay and was admitted and given the cash, and the operation was very, very successful. After about 10-15 days, he had to go back to London. And when he went to London, the hospital, the UK Health Services, they said, we want to see his gland. When I spoke to those people in Delhi, how can they go to take a permission from so-and-so, so-and-so? Then it depends whether your airlines will take the disease gland or not. Lord, after about 3 days, a lady comes to my daughter. He says, look, your husband will go to London. All these sanctions has come from the health ministry. So we said, we have received in letter. And you will not receive in letter. And your gland has to go by Air India International. No, not Air India. Some airlines yet. Good, it was done. He said, how much money has to be given for this gland which has to go to London? She says, no. It is a compliment. Kamal hai. Compliment. Kathon aaya. All the application was fine. From where the money has come, it was a mystery to us. Guruji ne kita. When the gland was sent to London, the doctor examined. Yes, it was diseased. And the doctor was shocked. He says the wound which happens after the thyroid is taken out, your operation was so neat, so clean, one can never make out from your body that the operation was carried out. So when Shashi Bahal had gone for 3 days to Bombay, our Guruji had menu Karadetta flat next to Satwadi, next to the mandir. So every evening we used to go there. एक दिन होते राजीव नहीं मनोज सूद वो मैंने आंटी ने कहना आंटी जी आज तुसी भोग लगाना. This is when Maharaj should left his छोड़ा. ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ में दाल सब्जी चपातियां और गिलास ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा पानी वो लेके गए तो पूरी तस्वीर के सामने स्वरूप के सामने रखी. 10 मिनट वैसे लेके वापस लेके चौंके ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ देता ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ was mixed with the rest of the vegetable and dal. Then ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਬੈਠੇ. In those days, below the mandir there was a huge hall where the langar was served. ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ and
I must tell you one thing. I tell you, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪੀਣਾ, ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ, जैसे खाधे, we went outside, and in that moment when we entered into the बड़ा लंगर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है. These are the 13 words and they were 13 steps when we went to the मंदिर. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जब ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, 9 दरवाजे बंद कर, 10वां दरवाजा खुल जाएगा. Understood? 9 दरवाजे बंद कर, 10वां दरवाजा खुल जाएगा. There were 9 steps, and on the 10th step you get over there. And what are these 9 doors? All the evils, panch, moh, pride, ego, and all those, they enter your body through your 9 openings, which is in your body. 2 nose, 1 mouth, 2 ears, and 1 tooth on the 9. Oh, that is the first time I came to know that the steps of the mandir, they also speak. They give you this message, the philosophy of Guruji. Right? I was very stunned. No other mandir, gurdwara, masjid in the world where the steps, intuitively, they talk to you. ये थोड़े पत्थर ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨੇ steps ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ. You can well imagine if the steps can speak and tell you ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, how powerful he was, how powerful he was. ये गुरु जी की कृपा है, ये ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ. You know, I can keep on talking for hours together. As a matter of fact, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, in short, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਕਹਿੰਦੇ in short. So I used to see, you go to see the pulse of them. When they become receptive, then just satsang kardana, he also gets into the sway. And when you get into the sway, just satsang karta, he is in a good mood. Just sunde hage, he is in a good mood. So the message is conveyed to the sangat. And अच्छा, ये मैं सत्संग खत्म करना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि गुरुजी ने अंकल आ गई 10, चलो जी 5 मिनट हो गए, खत्म करना ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈ 10. तो जिस समय मैं खत्म करके आ गया, गुरुजी हंस के मैंने कहते, वो तो अपने गुरु की गल नहीं सुनता. मैं तेन क्या शॉर्ट तू फिर के 5 मिनट ले जाना, फिर 1 मिनट पढ़ गया, जा बैठ कल्याण. So that was ਉੱਥੋਂ जब when you get into the mandir, the first 5 steps, they also speak ego, pride, lust, and greed. So the entire philosophy of life, you know these 5 evils, you know how they get into it, and you know how to cure it. Even an uneducated person, he will come to know about this. ये अपनी गुरु की मेहर है, ये यानी कृपा है. Then once I was going in my car to my farm, there's a friend of mine, कहते यार मैं कोई जमीन लेनी हैगी, and I want to grow roses and export the same to Russia doing materials. मैं कहा ठीक है. मैं कहा पहले मैं अपने मत्था टेक गुरु जी को ले आऊंगा, then we from there we stay the night and go next day to my farm. So रास्ते जब ऐसे जा रहे थे कि मेरे कार च शब्द कीर्तन लगे थे, which I always put wherever I am. मैंने कहते you have retired, I have retired. In now army which there was nothing, you know, to the boss, you know, or say yes sir, all that's good. Then now we are independent, let's be ourselves. Okay? Then finish. Satsang doesn't like, oh, unless I see a miracle with my eyes, I don't believe.
कहते why are you doing this satsang? Is this age? Listen to Michael Jackson, listen to so and so. मैं कह it is my hobby now. I always do this, whether you like it or not. He said, let me show me a minute. Only after 5 minutes on the Chandigarh Delhi highway, a vehicle comes, very good weather. पिछों आई ट्रक मेरे गड्डी के पीछे लगी. My God, my car टर्टल हो गई, crashed. वो भी बेहोश हो गया, मैं भी बेहोश हो गया. सर दुपट्टे हैं. In the meantime, people came to water on me, water on him, and both of us came to conscious. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ sir, today I believe that your guru is God, because if the God wasn't there, you would have been both gone. Ram Nam. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ next time मैं गया गुरु जी कोले, I was alone, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ. ਆਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ. So when this was there, and I asked somebody, an older man, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਆਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਆਈ? I do Paath, I do puja, I believe in my guru. Why this has happened to me? तो पता ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬਲਾ ਟਲ ਗਈ. You see what happens, your life is your ਥੋੜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ, think beyond that. Okay, so now what happens, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ठीक करने हैं गुरु ने, either is your prayers, your charity, your सेवा, और दुख तकलीफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ. ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, whether health wise, whether finance wise, or whether from your office or anywhere, if you say why ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ me. How can you say मैं me ਜਦ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ? And good enough. Although whenever you have a problem, just say, Tera pana meetha lage. My Lord, your will is sweet. That is acceptance. That is total surrender. Right? And Othoda, if you don't accept it, why me, nahi hona chahiye, then you're going against the will of God. And once you go against the will of God, then you know what happens. You have to be in tune to the Almighty. Whatever the Lord does, accept that grace. Right? That is total surrender to the Almighty. And you have never had it. Mercy Guruji, Kripa Sikhi, and he was watching the accident. He could have avoided it. But he didn't make avoid it. क्यों? मेरे कोई कर्म सीखे, वो बाल, वो जो प्रॉब्लम सीखे, वो हल कर दी. Right? Now, you see, one has learned so many things in life from Guruji, from satsang. Now you will be wondering, ये पाठ पूजा से बैठे भी कर सकते, right? Then why satsang? Satsang is there to clear your problem. You're sitting there, ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, sorry, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ positive vibes ਹੈ, ਕੋਈ negative vibes ਹੈ.
But when you're sitting in satsang in the mandir, there's so many positive vibes which are striking you. So ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, these positive vibes of the people sangat around, they help you in eliminating all the bad karmas of your life. That is why you go to Gurdwara, Mandir, Masjid. ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ। As a matter of fact, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 24 hours ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ 2 hours 40 minutes you must dedicate yourself for ਪਾਠ ਪੂਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, the song. So the song doesn't mean only money. It means your ਪਾਠ ਪੂਜਾ also. दूसरी ਗੱਲ, ये पाठ पूजा अपने वास्ते नहीं रखी थी, ये पाठ पूजा दूसरे वास्ते है, सेवा वास्ते है। When you do seva, you help somebody physically, you send him, help him financially, and then जब तुसी दुआ करते हो किसी दिन, right? वो थोड़ी तुसी जरी पाठ पूजा की है, a certain percentage goes into the spiritual bank of the patient. So his bad karmas are reduced, and that when bad karma is reduced, he recovers. He recovers. पुराने ज़माने तुहानू पता जी किते कोई बीमार हुंदा सीगा, most of the people used to go to the house, इन्होंने तसल्ली देखना, what तसल्ली, वो patient का बैठा बीमार होना है, the more people when they come to see him, he will feel suspicious. Why so many people have come to me? Am I on the deathbed? No. When somebody has problem and you go to his house, before you go, you should be fully charged positively. Your spiritual bank must be high. And when you go and meet that person, since you have got spiritual bank, you're full of positive vibes. So when you meet the sick man, a positive vibes that he has, or the haussla, his confidence builds up. He gets more of a positive energy, a positive thinking. And positive thinking is also cured with many other things. Have you understood? You must understand these things. फिर इस तरह की हुआ, being in the army, old system की जदों भी नहीं होना जी good club, drink, dance, music, गप शप मारो, stay the midnight, happy new year करके वापस आ जाओ. What happened once, I used to every time, I used to be with my Guruji and my wife. एक दफा मेरे friends कहते यार पूरा ever since you have retired, तेरा पासा ही बदल गया. You don't visit us, you don't talk to us. ये गाल भी करते हैं, मतलब भी करें, nothing beyond it. No jokes, no fun, no frolic. मैं कहा ठीक है, एक्टिव मैं मैं गुरुजी को नहीं जाऊँ, मैं क्लब में जाके will go for a dance and be merry. कहते ठीक. की होया सवेरे when my wife was making a cup of tea, उन्हें टीस्पून ते चाय पत्ती चला के ते चाय पत्ती पतीले च पा दी. She looked at the teaspoon. Teaspoon ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ leaves, but ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਮਚ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, and the chipka gave the photo, gave the snap of a snake. ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੱਪ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ, same thing happened. She comes to me, she said, this is what is happening. I said, ਤੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ you see for yourself if you think I'm telling a lie. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰ. मैं भी चौंके च गया, मैं कि कितना दिस टाइम आई डिडंट टेक अ टेबलस्पून. मैं वाइफ ने कहा तू नॉट अ टीस्पून, टेबलस्पून ले. So she did it with the tablespoon. Same thing. Tea leaves and go to the pani powder jamya, and this time clear, think image of cobra snake, of a Daan. Guruji is the Bhagat of Lordship, and snake is around his neck all the time. So I told my wife, this is a message for us. If we can't go to the club, Guruji ने अपन को बुलाया.
So next day, early morning, मैं और मेरी wife, we pushed off to Guruji. शाम वेले गए. The hall was lit up for New Year. Balloons sige, bundling sige, all that. And there was a large crowd of singers. You could never imagine. Okay, लोग डांस करने लगे. Music was on. सब कीर्तन was on. मैं ते मेरी वाइफ ਅਸੀਂ hall ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, resting the back along with the wall. ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, uncle dance. But we didn't do any action to dance. फिर कहते auntie dance. तो बैठे रहे. Because wife used to have a terrible backache for the last so many. And any moment, excess moment she used to do, she used that thing. Our only medicine for her was Brufen tablets. That is the painkiller. So when it was almost about 5 to 12, Guruji looks into me and said with a forceful voice, uncle, dance. I was scared. So me and my wife, we got up. Ashiji dance coming with a slow movement, but we were on the floor. रात के 12 बजे light are off. After a few seconds, the lights came. Balloon button lage. Everybody was wishing each other Happy New Year. Happy New Year. For the बाद naturally when you're doing Happy New Year, you go to meet your friends. जब भी पानी है. So me and my wife फिर उठे जाए. In the morning when she got up, she had no pain. कोई backache कोई नहीं for many years now. घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਬੜੀ Brufen tablets ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. It was sort of a food. When she was cured, मैं अपने lawn ਦੇ ਵਿੱਚ खड्डा खोदिया and I gave us ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Brufen the tablets मैं ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਆ and gave a very ceremonial farewell to those tablets. ਮਿੱਟੀ ਟਾਕ ਦੀ. And ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ she never had to go to a doctor for a backache. ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਰਕਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ ਲੀਵਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ I had to change my thought of instead of dancing coming to Guru Ji. Or Guru Ji then forced us to dance. Right? Or dance the way it was good. You know, Guru Ji never used to tell you directly. No. A maximum he used to tell you a lot of love and toke Guru Ji blessed. ये पानी पी लिया कर, जल प्रसाद ये है. आदान थोड़ा सा करते करो, whatever it is. Those were scares. He never told you take this medicine. He never said go to this doctor. He never said to get carry an X-ray. Guruji had an X-ray machine with him also. And what is that? Guruji lata dende se manje pe par or table pe par. He had a teaspoon. He used to take the teaspoon all around your body. और कहते आ तेन प्रॉब्लम. गुरुजी मैंने ये प्रॉब्लम तो है नहीं, तू करनी है ना, पर मेरा एक्सरे रिपोर्ट दे रहा है. Now you do this. आ दान कर, आप पाठ पूजा करें. Good enough. Next day when you go to the doctor, they carry out X-ray and the problem is revealed. ये कौन कर सकता है? ये रब ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता. You know, मैं छोटे मंदिर में बैठा था. A very smart lady. Guruji the चरण दबान और रोंदी रही, crying, tears are falling from her eyes. And then after that, चरण दबा के मेरे को कमरे पास से बैठ गई, and she was still crying. I said, auntie, why are you crying? Maka, you're sitting at a secret place. Our Guruji is there. Don't cry at all. Can we Roma na ki kara? And then my son had a love marriage. Wo the wife can I want to marry also.
मेरी डॉटर है, अरेंज मैरिज, very good family, very happy for 10, 12 years. All of a sudden, मेरा son-in-law कहना that I want to divorce. My husband is working in a big house, a CEO of a multinational company. Not a pay. I've got all the facilities that you could ever think of, ever dream of. मैंने कोई चीज का काटा नहीं है। ये गुरु जी कहती तू पाठ करनी है की? कहती हाँ जी, मैं सवेरे पाठ करनी है, दोपहरे पाठ करनी है, शाम को। And this is a ritual for the last so many years. गुरु जी पता नहीं पता कहते कहते आंटी ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ। This is the first time I came to know if you're doing as a formality the part, that part goes over the next well or lagna. So whenever you do part, you must do with bhavna, you must do with emotion. Keep the thought in your mind. Oh, part should like that. As a matter of fact, I would say that when you're doing part, your body should respond. Bhavna. What is bhavna? You should be emotional charged. ताकि थोड़ी अखंड ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े आंसू आए। वो आंसू नहीं है, वो रब की तरफ अमृत है और थोड़ा पाठ लग रहा है। सो टाइम्स टू कम ਜਿਹੜਾ थोड़ा स्पिरिचुअल बैंक हैगा, थोड़े बुरे कर्म हैगे, वो आस्ते आस्ते ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ हैगे। your praise गुरु जी कई दिन लोगों ने प्रॉब्लम ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, and some people used to come for day when this problem was over. So somebody asked Guruji, he said, Guruji, वो तो 5 साल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਹਿਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰ 3 ਵਿੱਚ in split of a second, ਰੱਬ ਕੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। if you are sincere, your path, your puja, your satsang, your seva, okay? So that is now in a normal way of, in a normal life. What happens if somebody says something against me, or if I hear somebody talk ill of me, I will feel bad, right? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, I become rebellious. ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ, whatever. You know, when somebody passes against me, thinks bad of me, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ 10% of the 24 hours praise comes into my spiritual bank. ਤੇ ਮੇਰਾ spiritual bank बढ़ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, if at all my spiritual bank was less, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। Whereas the other person who has criticized me, ਉਹਦੀ bank balance ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। And if there's any problem which was yet to come and did not come, it will come now because the spiritual bank is on this. So when everybody speaks against you and thinks ill about you, be happy, be rejoice. That is the hour of death. So now this is called passive bhakti. So बैठे without your effort, without anything, दूसरा part थोड़े विच आ जाएगा, and your spiritual bank is gone up, and all your desires are slowly fulfilled. So never feel bad. Feel happy. आज मेरे ऊपर कृपा हुई, ये रब दी मेहर। Now, another thing what I would say is, Guru मेरे संग करना। Now, आप कितने काम करने थे, we forget about the Guru. The only time when we have is to ourselves, when we are doing the work, do with concentration, with this whole with thought. You see, as a human body, if you're neutral, Ravadi grace on thee and thee, but it is you who put the obstacles for the grace.
not to come. So if you're concentrating on a particular thing, you need not say Vaheguru. You just concentrate on things, because then no other thought is coming to your mind. It's a prayer. What normally I do when I'm going in a car, I always imagine कि ਜਿਹੜੀ कार मेरे ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ बैठा है और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ. With the result is I'm concentrating on the road. My thought is not left and right. My thought is मेरे गुरु के ऊपर और आगे बैठा है आगे बैठा है मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ. So if it takes 6 hours to travel from Chandigarh to Delhi, and if I keep this in mind, so for 6 hours I have prayed. Normally can be 2 घंटे 10 मिनट 40 मिनट is the minimum requirement. But here you've done Paath for 6 hours. And then the golden hour is the night. When you sleep, normally this of 8 hours. You're sleeping. You're dreaming sometimes. Okay, good thoughts, bad thoughts. No, that is not the way to sleep. The way to sleep is when you're in your bed. Don't look at the time. You have to go to sleep. The moment you put the lights off and you say good night, whoever's nearby, ਤੁਸੀਂ ਰਜਾਈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਬਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ just take your thought to all the ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੋਂ in imagination ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ right ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਚ imagination visit and then after this thought you're still in your bed you're still awake keep on saying Hariom Hariom Vaheguru. And you will fall asleep automatically. You don't have to make an effort to sleep when you're doing these prayers, your imagination. Automatically you fall asleep. So next morning when you get up after 8 hours, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ 8 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਿਓ. Right? Now these are what they call the passive prayers. Without your effort. ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ criticize ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ and you say my lord the will is sweet ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ your thought कभी खबे चला गया उसको दरवाजा बंद कर देना ये जो टेलीफोन आया है उसको बोले मैं पाठ कर रिमेम्बर your part should never be told to anybody. A part है ये गुप्त. The moment you see थोड़ा नौकर के अंदर बीबी जी पाठ कर रहे हैं ये थोड़ा पाठ हैगा it becomes null and void. It's a business then you're doing. M is seva. When you do seva, maybe in the form of money, maybe you're giving atta dal something to a langar. Maybe you're going to an orphanage where the girls are to be married. You give money for the clothes and all. You don't have to tell anybody. Because the moment you tell anybody, you're inviting, I have done man. जैसे मैं है उसे वो नहीं है जैसे वो है उसे नहीं है. Remember this. You know, I mean, I would say that what I feel these 3 points मैं समझे 10 से 4-5 like this art of living. I would say the art of spiritual living. Cultivate art of spiritual living in your normal way of life. Everything is possible with Guru. Once Guruji was coming from Simla, taking job with the pass through, and he had to go to Bhai Gurdal Singh's house, Uzaragi, no more. Now Gurdal Singh had lost his voice. So Guruji ne jara siga
वो कहता ये this man has lost his voice. गुरुजी कहते मैं मिलना. On the way, some people लकड़ियां लेके जा रहे थे for the cremation of somebody. And when he passed by her, the body he asked, एक लकड़ियां काटते थे जो थे that boy has died and there is going to be cremation this afternoon. और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ और लोग लकड़ियां लेके. So Guruji asked, ये मुंडे का नाम ਕੀ है? So those people said, this is the name of Guruji. What has happened? He has died. कहते when लोटे पानी दियो. He took the water, sprinkled over his body. कहती है जो नौ ये मुंडे का नाम हैगा ऐस नाम दी कोई मौत नहीं. This name of today there is no death for this man. And after about 12-15 minutes, that boy came back. These things have been told to me by the people who actually visited that boy's house when they had to go for submission. Can you believe it? Otherwise, I should talk to somebody else. And that, is it possible? How can it be? So this, actually, then thereafter, Guruji went to Bhai Gurdas Singh's house. कहते यदि दवाई नहीं है, यदि दवाई एक कोई है शब्द कीर्तन. कहते गुरुजी ये कैसे शब्द कीर्तन करके तो आवाज ही नहीं. कहते कि हारमोनियम फड़ हारमोनियम बजांदा जा और अपने मन दे विच कुछ भी सोचता रहे. If he doesn't know any शब्द कीर्तन, just keep on saying वाहिगुरु वाहिगुरु ओम ओम and music चलनी चाहिए. Can you believe it? After 7-10 days, he started getting his voice back. ठीक हो गया. और the बाद भाई गुरदास सिंह का हूं तो मैं ठीक हो गया. Thereafter he became lazy. हारमोनियम में कीर्तन को कैसेट पर कर देना, कभी नहीं कर देना, कभी टिल्ली हो गई. Thereafter his voice started getting low और खत्म. So somebody बोलिए तो ठीक है. Sorry. कहती दवाई तो बंद करती. कहते गुरुजी कड़ी दवाई. कहते मैं तो कैसे पाठ पूजा कीर्तन करेगा. So he started that again. And thereafter he got such a melodious voice. जो हर लोग के अंदर तुम मेरे कारण, तुम मेरे कारण. His booking was like a 5-6 महीने बाद booking. आज उससे जाना है. आज उठे. So such are the miracles of God. गुरुजी ने कदे पैसे नहीं मांगे, कोई गिफ्ट नहीं मांगी. ਤੁਹਾਨੂੰ पता पहना जब हम देसी मानते देवे तो लोग कोई बर्फी ले आ रहे हैं, काजू ले आ रहे हैं, कोई फ्लावर्स ले आ रहे हैं. गुरुजी ने पहले बंद किए कि कोई नहीं ले आएगा, सब्जी नहीं लाएगा, सॉरी मिठाई नहीं लाएगा, ड्राई फ्रूट नहीं लाएगा, कुछ नहीं. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर गुरु जी लोगों ने ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ. ਕਹਿੰਦੇ when you come to my mandir come empty. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ. Come to me as a child. So whatever you listen to Shabad Kirtan, that will be absorbed in your body and according to you. You know, जब satsang और जब से गुरुजी को जानते थे शब्द कीर्तन होती. All of a sudden, Guruji would tell Rajinder Singh, who used to put on the music, ये बंद कर, आकर. So when he used to change the Shabd Kirtan, that was an answer to a Mr. X. कि ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ, where is the answer to this? So Guruji through Shabd Kirtan, the answer was given to the king. ये है अपने गुरुजी. He never gave lectures. He never gave any sermon. Yet he used to say, don't tell lies, be a normal human being. Do your prayers, and you will see the fruits of your prayers and good living, spiritual living by your spirit. फिर लाइफ में मैं थोड़ा कभी अंग्रेजी बात करता, कभी इंग्लिश बात करता, पंजाबी.
ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨॉर्मली ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਪੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ in the army, within the officers, we know which talk speak with English, but not. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਕਲ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। Then I understood, somebody told me, when you do satsang, it should be assorted languages. कि मैं इंग्लिश भी बोलना, पंजाबी भी बोलना, हिंदी भी बोलना, so that whatever I'm trying to convey, that message is given to all parts of the thing. One of the things जैसे याद आती रहती है, once a past stage ऐसे गुरु जी को बैठे सीगे, काफी सारी संगत, 200-250 बंदे सीगे। A Britisher comes with a wheelchair, and there's a lady who was paralyzed. वो wheelchair चोने गुरु जी को ले आए। He said, my lord, Guruji never spoke English, but he knew English backwards. Guruji was MA economics. So can my lord, my wife is paralyzed. Please do help. Okay, Guruji nu kende Punjabi vich, tu sach das. There was a translator with him also. So the message was translated to him. He says, please tell the truth. So can Guruji nu kende, she is my wife. Guruji nu phir ke, please sach bol. He said, this is not your wife. Your wife's name is so-and-so. And yes, my lord, this is your girl. Yes, my lord, I'm very sorry for giving you the wrong impression. Guruji knew everything. Everything. वो सत्संग से होते थे। After the langar, Guruji ने कहना तू भी जा, तू ऐसे जा, कोई 12 बजे जा रहा है, कोई 1 बजे जा रहा है, कोई 2 बजे जा रहा है। So one day I thought to myself, in the eyes of Guruji, everybody is alike. There is no big man, there is no small man, everybody is alike. Then I asked this old man who was very, very close to Guruji. मैं क्या मैंने समझ नहीं आऊंगी कि गुरुजी की इतनी देर बिठाई जाती है कि एकदम भेज देंगे है। कहते ऐसे है अंकल, when you start coming to Guruji, he makes sure that your drive to Guruji's place is excellent. There is no evil spirits on the way. So when you go back, Guruji shows that if you have to go from Empire State to Noida, he will send you at that time when there are many Mahapurush की spiritually कुमरे है, और वो महापुरुष की जो thinking frequency है, that should match your frequency. And then I allow him to go so that his journey is. देखिए कितने सारे गुरुजी बोले, with Guruji one learned a lot of things in life. बढ़िया किताबें पढ़ी on spirituality. For 25 years I did nothing, was in the world also. पर जब मैं गुरुजी में मिला, जिंदगी का स्वाद उड़ रही है। ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਛੱਤ 'ਚ ਬੰਦੂਕ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਘੱਟ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। But once I met Guruji, I would say that was the beginning of a new chapter for me. Although मेरी जिंदगी का स्वाद, only I feel so happy. You all are very lucky that you have met Mahapurush so easily. Here I struggled for 25 years. सारे दुख, सारे तकलीफ। And whenever I used to do satsang, Guruji, and the music after that, my satsang was Aukhi Kadi Na Nikhi. Always. मैं करीब 135-150 satsang की तो Guruji in Delhi itself. Guruji मैंने कहा जोधपुर जा, बुलढाना जा, मेरे से जा, मेरे से। It was always the past day. Aukhi Kadi Na Nikhi. That was Guruji's prayer. कैसा गुरुजी अपनी संगत का ख्याल कर दे। Tell you to
मेरी जिन्ने भी कड़ियां औखी कड़ियां सी सारी गुरु जी की कृपा नाल खत्म की खत्म हो गई। Then I would say that after meeting Guruji, खुशी आईयां, मौजा कीतियां, हैप्पीनेस आई, सैटिस्फैक्शन आई, कंटेंटमेंट आई, and above all, मैं ये भी कहना है आनंद आनंद आनंद। So nice satsang, my sangat. And in case anybody has any doubt, is most welcome to ask me. I know I have taken a lot of your time, but that once you get into the mood of this, oh, मेरे ऊपर भी गुरु की blessings होती है. The more I lengthen the period, more the blessings on me, and more the blessings on you also. And I would also say, Sarvada Pala, be well wisher for everybody. If ਤੁਸੀਂ ਕਾਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, if you another man on the right is prostrating, you should be happy. कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ी। And in the end, thank you so much. और मेरी एक ही अरदास है और कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी मैंने छप्पड़ फाड़ के दिता है, मुंह छप्पड़ा से छप्पड़ भी फाड़ के दिता है। मैंने गुरु जी की एक ही अरदास की है, मेरे गुरु मैंने तो अपने चरणों की मौज ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा रखना। यही मन छेगा, यही मैं गुरु मेरा गुरु होगा, यही मेरा बल। And again I would say, in the end, if there's any heaven on earth, it's but here. It's but here. Thank you. Jai. Any questions? Hello. 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 Jai Guruji. Jai Guruji. Uncle, my voice is echoing, so I'll be brief, but then Shukrana. आपने सत्संग शेयर किया, beautiful, divine blessings. Right. And any questions to be asked? Yes. Sangatji, please raise your hand if you have any questions.